Good morning, children. Last time we had seen different chemical reactions of haloalkane and haloarine. Today I will discuss physical properties of haloalkane and haloarine. Alkyl halides are colorless. Bromides and iodides develop color when they are exposed to light. CH3Cl, chloromethane, bromomethane, chloroethane and some chlorofluoromethanes are gases at room temperature. But higher members are liquids or solids. Correct? Due to high polarity. Now you can ask, teacher, what is high polarity? You see here CH3Cl. Chlorine being more electronegative, so it will develop delta minus charge, and so carbon will develop delta plus charge, so the compound will be polar. So due to high polarity, intermolecular forces of attraction are more. So boiling point of chlorides, bromides and iodides are higher than hydrocarbons of comparable mass. मतलब जो एल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्काइल क्लोराइड हो या एल्काइल ब्रोमाइड हो या एल्काइल आयोडाइड हो, उनमें और जो हाइड्रोकार्बन अगर सेम मास है, लगभग अप्रॉक्स सेम मास हो, then boiling point of alkyl chloride, bromide and iodide will be higher. This can come in 1 mark question in board. For the same R, what is R? Alkyl group. The order of boiling point, याद रखना है बेटा ये सब. So, the order of boiling point will be Ri will be greater than Br, then RCl, then Rf. R is alkyl group. The boiling point also depends on branching. What is branching? B-R-A-N-C-H. Okay. What is branching, beta? Branching means linear compound or branched compound. So it decreases with increase in branching. Let me show you with this example. It will be more clear to you. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. So this is 1 bromobutane and the boiling point is 375 Kelvin. What about this compound? 1, 2, 3, 4. Same compound is there, same, but position is different. It is 2 bromobutane. दिख रहा है एक branch हो गई. So boiling point is less. Here it is 364. And what about this compound? It is 1, 2, 3, 4 carbon again are there. But this is tertiary butyl bromide. कितनी branching दिख रही है? So you can see the difference between the boiling points. 375. 1 branch 364 and 346. Now we will talk about solubility. Haloalkanes are very slightly soluble in water. They are soluble in organic solvents. Let me show you in text question 10.6. 1 mark question could come from this. Arrange each set of compounds in order of increasing boiling points. 4 compounds are given. You can see chloromethane, bromomethane, bromoform and dibromomethane. Most of you must not be knowing what is the formula of bromoform. Let me show you. This is CHBr3. Bromoform. So, the lowest boiling point will be of 1. That is chloromethane. इसको मैंने 1 rank दिया. So, chloromethane is the least boiling point. Then second one bromomethane. Okay, so chloro के बाद bromo, so here we will write second number I had given it. So 1 least boiling point, then 2 and then what about 3? What is 3? 3 is dibromomethane. 2 bromo आ गए, dibromomethane, and last one is 4 bromo is there, so bromoform. So this will be order from less to high boiling point. High BP, boiling point. Correct? Second question is 1 chloropropane, isopropyl chloride and 1 chlorobutane. Right? So in 1 chloropropane, let me show you the structure. CH3, CH2, CH2, Cl. Correct? 1 chloropropane. What about isopropyl chloride? बेटा क्या होता है? 2 chloropropane को कहते हैं iso position पे है. So 2-chloropropane is known as isopropyl chloride. 2-chloropropane.
and third one is 1-chlorobutane. No need to explain how to write. So what we see, इसमें branch हो गई. So least boiling point will be of this branched one, 1. Then 2-chloropropane and then bromo बड़ा, butane बड़ा है, so 1-chlorobutane. So 1 is smaller than 2, 2 is smaller than 3. Less to high boiling point. Correct? Now, chemical reactions. Reactions of haloalkanes. First one is nucleophilic substitution reaction. Second one we will read in this chapter, that is elimination reaction. And third one we will read in this chapter, that is reaction with metals. Nucleophiles and electrophiles. Lifelong के लिए दिमाग में सेट कर लो. What are nucleophiles? न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, सो न्यूक्लियस के पास कौन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज. सो नेगेटिव चार्ज आयंस और ग्रुप्स, नेगेटिव चार्ज आयंस और ग्रुप्स. करेक्ट? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली राइट नाउ. So in this type of reaction, कौन से type of reaction? I am talking about nucleophilic substitution reaction. In this type of reaction, a nucleophile reacts with haloalkane. Reacts with haloalkane. Correct? First point. Then what happens in this haloalkane? Partial positive charge is on carbon atom. Correct? Then a substitution reaction takes place. A substitution reaction takes place. Correct? Next is सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है? सो हेलोजन इज ऑलरेडी देयर, तो न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट हेलोजन एटम. ठीक है? नाउ लेट मी शो यू विद द रिएक्शन. कैसे लिखेंगे? दिस इज न्यूक्लियोफाइल. आई सेड यू न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. प्लस if I write the example of CH3X, so this is C, this is H, this is H, this is H and this is X. X के ऊपर delta minus charge है. Why? Because they all are halogens. So delta plus charge will be there on carbon atom. So what will form? ये X will be substituted with this nucleophile. So now the compound will be this and nucleophile will be there. प्लस एक्स जो है आयन वो सेपरेट हो जाएगा. अंडरस्टूड? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Then let me show you the mechanism of the there are two types of reaction. SN2 type of reaction. किसकी बात कर रही हूँ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दो तरह के होंगे. SN2 type of reaction and SN1 type of reaction. पहले मैं लिख के बताती हूँ. What are SN2 type of reaction? In SN2 type of reaction, substitution, इसका नाम क्या है? Substitution nucleophilic bimolecular reaction. Two molecules are there, so bimolecular reaction. Here what we see, OH is the negative ion, correct? And this is CH3Cl, okay? So what will happen? A transition phase will be there. ठीक है? Intermediate नहीं compound बनेगा. Transition phase will be there, and in that, if this is C, so here H, here Cl is already there. OH will attach from this side. OH, then this side again hydrogen H, this side again hydrogen. You see, CH3 Cl was already there. OH gets attached. As we know, कार्बन की 5 वैलेंसी पॉसिबल ही नहीं है. So here 1, 2, 3, 4, 5. So this is only a transition phase. Do not get confused with the step. Okay? Only transition. ये बहुत little time के लिए होगा. And now what will happen?
द न्यू कंपाउंड क्लोरीन को तो अलग होना है हेलो एल्किन से, तो व्हाट विल बी देयर, OH विल बी एडेड. सो इट विल बी रिटन एज दिस इज C, this is H, this is again H, and this is again H, and here it is OH. So OH is now attached. Correct? OH attach हो गया, तो where the Cl has gone? Cl ion is separated. Now what we see children? जैसे बारिश में, तेज बारिश में अपन जाते हैं तो अम्ब्रेला कैसे उल्टा हो जाता है, इसी तरह से यू सी दिस कंपाउंड इज जस्ट इन्वर्टेड. ठीक है, पलट गया है ऐसे. सो दिस टाइम all the H are of this side and OH has joined this side. So this is the nucleophilic substitution reaction, SN2 type of reaction. Important चीज क्या है पता है बेटा इसमें? This is a second order reaction. Second order reaction. ये मैं बाद में बताऊंगी what are first order reaction and what are second order reaction. Here the rate of reaction is dependent upon the concentration of nucleophile and concentration of substrate. दोनों पे डिपेंड करता है. So R is equal to K क्या हुआ? Constant. K of nucleophile. nucleophile के ऊपर माइनस लगाना नहीं भूलना, माइनस, and it is the substrate. यानी rate of reaction is dependent upon two things, that is nucleophile and substrate. Therefore it is known as bimolecular substitution reaction. फटाफट से इसके सब पॉइंट्स में तुमको बताती हूँ. It depicts a bimolecular displacement, SN2 reaction. Bimolecular displacement. The two processes took place simultaneously in a single step. Do not get confused. This is not the step. No intermediate is formed. वो intermediate नहीं है. As I told you, it is transition phase. When reaction progresses, the bond between nucleophile and carbon atom start forming. Nucleophile और कार्बन के बीच में bond started forming. Correct? And the bond between carbon atom and leaving group क्या है? Halogen. It weakens. So, or inversion of configuration. What is inversion of configuration? I told you, जैसे umbrella turn हो जाता है, वैसे ही यहाँ CH3Cl का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, एंड अभी जब रिएक्शन के बाद ऐसा हो गया, पलट गया. ओके, दिस इज इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? प्राइमरी हैलाइड, 1 डिग्री. याद आया? हेलोजन कंटेनिंग कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम. प्राइमरी हैलाइड, देन सेकेंडरी हैलाइड, देन टर्शियरी हैलाइड. करेक्ट? Now, nucleophilic substitution reaction of unimolecular type, SN1 type of reaction. It is carried out in polar protic solvents like water, alcohol, acetic acid, etc. Example क्या दिया हुआ है बुक में, and what I will show you. Example is between reaction of tertiary butyl bromide, tertiary butyl bromide and hydroxide ion, OH ion. ठीक है, तो let me show you the reaction. How to write tertiary butyl bromide? We all know CH3 3CBr plus OH. Then compound form will be CH3 thrice COH. Br will be replaced और Br ion बाहर हो गया. This reaction takes place in 2 steps. पहला वाला कैसे पढ़ा था? 1 step only. Here it is 2 steps. First step is CH3 whole 3 CBr, tertiary butyl bromide, will be. Now Br will be leaving the group. जब Br माइनस चार्ज बाहर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो दिस टाइप ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोकैटायन. सो लेट मी शो यू. हियर इट इज C, यहाँ एक CH3 कर दो, CH3, हियर ऑल्सो CH3, हियर ऑल्सो CH3. डू यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन?
और ये कार्बन बेचारा कैसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. वाई? बिकॉज ब्रोमाइड आयन इज लेफ्ट. सो प्लस Br माइनस. दिस इज स्टेप 1. राइट हियर स्टेप 1. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जैसा हुआ क्या है, दिस इज हेट्रोलिटिक फिशन. इम्प्रॉपर फिशन. फिशन यानी टू ब्रेक. ब्रोमाइड अलग हो गया, बाकी का ग्रुप अलग हो गया. राइट. नाउ दिस कार्बोकेटायन C प्लस CH3 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 प्लस OH. अब OH को ज्वाइन होना है. फर्स्ट स्टेप में ब्रोमाइड अलग हो गया, अब इसमें OH को ज्वाइन करना है. ध्यान से देखना कितना इंटरेस्टिंग है. दिस इज माइनस आयन, ओके, एंड दिस इज प्लस. सो ऑब्वियसली दिस विल बी अटैच्ड हियर. सो स्टेप 2. दिस इज स्टेप 2. What is step 2? Now this will attach to the CH3 whole 3COH. Tertiary butyl alcohol is formed. Correct? This reaction, SN1 reaction, occurs in 2 steps. Step 1 and step 2. I will send you the PDF, तो तुम उसमें देखोगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा. And everything is written in NCERT crystal clear, children. Don't worry. Step 1 reaction is slowest and reversible. Reversible, you understand, children? Rate of reaction depends upon the concentration of alkyl halide and not on the concentration of hydroxide ion. So rate of reaction is proportional to S. Only substrate समझ में आया, जिसके ऊपर काम कर रहा है अल्काइल हैलाइड, OH पे नहीं डिपेंड कर रहा है. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज और R इज इक्वल टू KS. S मीन्स सबस्टेट. दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लिख लेना टेक्स्ट बुक में ही, है ना. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और कैसा था, SN2 कैसा था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. और SN1 कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कोई पूछे क्यों, then answer will be rate of reaction is only dependent upon the concentration of substrate here, and in SN2 rate of reaction was dependent upon concentration of substrate as well as concentration of nucleophile. So SN1 में फिर जो कैसे होगा, सीरीज कैसे होगी, tertiary alkyl halide will be best giving this reaction, then secondary halide, tertiary के बाद secondary, secondary के बाद primary, and then CH3X. Correct? So my advice is go through the PDF, see the video properly, understand, and if any queries are there, call me. Thank you.